Ready? Thank you very much for सबका press conference करने के लिए. First of all, I will ask Mickey to start the press conference with a few words. Then Sarfaraz will say and then Thank you, Raz. Thanks, Raz. Afternoon, ladies and gentlemen. We sit here at a very exciting time now, I think, in terms of Pakistan cricket, and certainly in a very exciting time in terms of this cricket team. We leave Pakistan today on a journey that we've worked really hard. We've worked really hard at over the last couple of years. We leave very, very well prepared. We leave as well prepared as we possibly could have, and we leave a team that I believe in both in talent and attitude, and believe that we have the skills to be really successful. Our preparation phase has been outstanding. Our preparation now leading into this World Cup is brilliant with a series against the world's #1 ranked side in their own conditions. That will give us an opportunity to really test ourselves. It will give us an opportunity to test our combinations and give us an opportunity to hopefully hit the World Cup with a lot of confidence. Thank you very much. अस्सलामुअलैकुम सबसे पहले, और जैसे कि विकी ने बताया एज अ कोच और एज अ कैप्टन भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और सारे लड़के वेल प्रिपेयर्ड हैं. यहाँ पे हमने बहुत हार्ड वर्क किए 3-4 दिन जितना भी हमें टाइम मिला है, और उसके अलावा भी हमारे पास वहाँ पे टाइम है. और टीम बहुत ज़बरदस्त है, हमारी बड़ी बैलेंस टीम है. बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत अच्छी है, बॉलर हमारे पास मौजूद है. तो इंशाल्लाह हम एज अ टीम पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें. और जैसे बताया कि हम सब कुछ जो है पूरी तरह तैयार होकर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपना पैसे मैच देने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में. First, पहले हम मिकी से क्वेश्चन लेंगे in English, then we will move on to Sarfaraz. Mickey, good luck your mission World Cup. Good luck your mission World Cup. Thanks, sir. What do you think Pakistan teams are favorites or underdogs? I think there's 10 very, very good cricket teams, and I think that's what makes this World Cup so special, is that you have to arrive every day. You have to put your best on for 10 games, and initial phases to qualify and get into those top 4, and then hopefully take it from there. We know that if we play to our best of our ability, we have the potential to certainly go all the way. But as I said before, there's a lot of very, very good cricket teams out there, and we're going to have to play very well. Mickey, I think that the off-spin department of the team is looking somewhat weak in presence of Sharmal and Hafiz, because both are not in their true form from the last 20 years. So how you will depend on these two guys when the other teams have around 20 batsmen, left-handed batsmen, and against, as you know, against left-handed batsmen, your off-spinner can be very much affected. Yeah, that's a good question, and we have belief in Shoaib Malik. We have belief in Mohammad Hafiz. Mohammad Hafiz actually bowled a couple of balls yesterday at our training, which was pleasing to see. In terms of our squad balance and in terms of our strategy, they will play a role. At least Safi has the ability to have off spinners at his disposal. We made no secret of the fact that our strategy is going to be to attack. We're going to look to take wickets. We're going to look to take to bowl sides out, because I think that's how we're going to win games. That's our strength, and we feel we've got it covered now in all departments. We've got left arm spin, we've got leg spin, we've got left arm quick, we've got right arm pace, and we do have the ability of Malik and Hafiz to bowl off spin for us. So we think we've got all bases covered. Vicky, Babar Azam yesterday asked about Pakistan's strike rate issues, and he said that he is #1 batsman and he does not need power rating. So do you agree with this notion? Sorry, I missed the name. Babar Azam. He was asked yesterday about Pakistan's power rating issues, and he said that if he is #1 batsman, then he does not really need power rating. Baba has a specific role within the team, and I can honestly say we've got some serious batsmen in our team. But Baba Azam, the way he's playing at the moment, has the ability to be as good as anybody in the world. If Baba Azam's getting us 100,
we're comfortable that we have the batsmen around him to get us scores of 300, 320, etc. Barber plays a very key role for us. Barber's strike rate at the moment, over the last 2 years, is just on 80. Barber knows he's got to increase that, as do a lot of our batsmen, and that's something that we've spoken about and something that we've worked on. Barber is so talented, he has the ability to do that anyway. If Barber's getting us hundreds, we're comfortable most because we think we've got enough in our other batsmen to be able to get the required scores. Vicky, are you missing Shadab Khan from medical squad? No. Would you like to share his medical history? Sorry, I missed that. The Shadab Khan? Shadab Khan medical report, and are you missing? Oh, look, Shadab's a wonderful cricketer. He's we call it, I think the buzzword in world cricket at the moment is three-dimensional. Shadab is three-dimensional. He fields cover point for us. He bats in the top 7 or 8, and he plays a very key role for us just outside the power play in terms of taking wickets. So of course we miss a guy like Shadab. However, we've tried to cover that hole with a like-for-like wrist spinner, and we also feel that it's not about one man. The team's certainly not about one man. There's a squad of 15 that's going to go to the World Cup, and all 15 of those players have the ability to win games, and all 15 of those players will step up and cover the hole that Shadab leaves. And I've got to say right now that he's not out the World Cup. There's certainly hope on him playing, and we'll see how that evolves over the next couple of weeks. Vicky, in the ICC events, we have seen the wickets are flat, and in a sense, the conditions are tailor-made for big scores. But over the years, Pakistani batsmen have struggled to score at brisk rates, and this is the same lineup which has had that problem. So how do you think that you'll be able to sort of cover that problem with these batsmen? We've been working extremely hard on covering that issue. We've looked at our strike rates. We've spoken about that as a batting unit, and the players have worked unbelievably hard on that. Yes, we've been following the scores in England at the moment, and it has appeared that there has been big scores scored. However, I'll remind you that during the Champions Trophy, which was only 2 years ago, the average score in the Champions Trophy was 283. I think I'm right, am I? The average score was 283. And we're comfortable that if the conditions are the same, if they dry, we have the ability to reverse swing the ball. If the conditions are slightly overcast, we've got the ability to swing the ball and to seam the ball around in our attack, and we're comfortable we've got a batting unit that can fulfill all the roles required. I think the key for us right now is that we leave Pakistan incredibly well prepared and with the best possible team that we could have picked. And the belief that we have in these players is massive, because we believe they're incredibly skillful and can go all the way. Vicky, hi. You said after Shadab was injured, you said he's not out of the World Cup, but we have selected Yasser for the England series. Yasser hasn't been in great ODI form. Do you still think if Shadab isn't fit for the World Cup, you're definitely taking Yasser, or is there a chance you might take another spinner if Shadab doesn't quite perform to expect? Oh, look, I think time will tell on that one, Daniel. When we sat and selected with Inzi yesterday, Safi and I, we looked at somebody that can replace. We looked at a wrist spinner. Wrist spinners, it's vogue in cricket at the moment. All teams have good wrist spinners. Yasser was the fastest to 200 wickets. Let's not forget that. Albeit in Test cricket, yes, that shows he can bowl. The last 2 ODIs that we played against Australia, he bowled the best he did in that series. The key for Yasser is to challenge both edges. If Yasser's challenging both edges of the bat, the inside edge and the outside edge, he becomes a different beast. If he's only challenging the outside edge, players can line him up and hit him one side of the ground. Yasser is under no illusions that he has to challenge the inside edge as well, and that means bowling his googly more often. He bowled his googly with decent effect in those last couple of games, and the conditions in the UAE, the wickets were particularly flat and didn't turn.
If we get on a wicket that just grips a little bit, Yasser, we still feel can be a weapon for us. But in terms of your initial question, time will tell on where we go in terms of the final World Cup squad on that one. Sure. We did talking about the combination team. You said in the part of this is that there are 4 slots left for the guys to be played for the World Cup. Are you satisfied they are playing successfully? Yeah, I'm very satisfied. I'm very satisfied we've filled our slots successfully. I'm incredibly confident and incredibly excited about the skills of the players that we take away now. There's room for us to move because every team's still got until May the 23rd. That's not the focus for us though. The focus for us is going now, getting confidence, beating England, and then taking that those combinations into a World Cup. I'm confident we've filled those slots successfully. Thank you. Usually our batting that we are afraid of, but this time the bowling that seems a little inexperienced with no Ahmed, no Shamari. Well, Amir's going to be in England. I think we understand Shinwari's. He's done exceptionally well. Shinwari. He's very unlucky to miss out. I think we've covered the bases in terms of our attack. With Hassan is now an experienced bowler. He's an experienced campaigner. Junaid and Amir in our initial 17 as they sit are experienced campaigners. They're bankers. You know what you're going to get from them. Shaheen Shah Afridi is a wonderful talent. We know that. Fahim Ashraf, we think, has got better and better and better over the last couple of years. He's certainly proved his worth, and he's working on and becoming a really good all-rounder. And then we've got the surprise package, and I think we looked at as a selection panel. We did our homework in terms of opposition we were playing against, conditions we would likely come up with. And in our name, we've got an X-factor player. The captain has a player that he can throw the ball to if he needs a wicket, if he needs to strike. We understand he's inexperienced. Sometimes in inexperience and in youth comes a lot of attitude, and we're hoping he gives us that. And certainly against four of the 9 teams we're going to be playing against. He comes into the equation that when you're talking Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, and West Indies, where we're going to have to beat them, we'll beat them with express pace. So he forms part of an initial game plan for us. Vicky, you always emphasize on fitness. So why unfit, not fully fit, Imam Wasim to dare to ask his fitness as in the side? No, Imad Wasim, he's got better and better. Imad's attitude to fitness has changed completely. He shed 25% in skin folds. He's working incredibly hard. He's got an issue with his knees. Yes, he has an issue with his knees, we know that. We're still not compromising on our fitness standards at all. And Imad knows that. And Imad's worked incredibly hard to get himself into the best possible physical shape he can be. However, for us now, we've got the base in terms of our fitness. All our players are at a level they need to be. For us now, the concentration goes on to skills, it goes on to execution when we get to England, because we've done the hard work. The base in terms of that is covered. And as I've always said to you, fitness has been a non-negotiable for us in terms of the squad. Not because it guarantees you success, it doesn't guarantee you runs and wickets, but it guarantees you a better chance of recovering. We've got 20 games in the UK, we need to recover quickly, and it gives you a better chance of runs and wickets. So we're very happy that we're very well prepared in that department. Mickey, and nowadays yo-yo test is gateway to Pakistan team. But topper in the yo-yo test and best performer, very good batsman Mohammad Rizwan, not existing in 17th even. Why? Yeah, Mohammad Rizzi's he's an incredible player. He's come off 200s. He was fantastic in the UAE for us. Rizzi doubles up as a keeper batsman. Our captain's a keeper batsman. Rizzi, we're hoping will be one of the players we have in England, ready to step up at any time if we need a replacement through injury. Rizzi's cricket has gone to another level, and we're really proud that he gives us a lot of depth in terms of our squad now.
Nikki, do you think World Cup is your last job and you want to finish it with a high note? And secondly, what about Amir? Do you think he should be a part of a World Cup squad as he's a part of 17 players? To answer your first question, hopefully the World Cup is a massive highlight for all of us. Let's hope. In terms of it being my last job, it's certainly in Pakistan. I hope not. I still think there's unfinished business, but that will be up to the PCB at the end of the World Cup to make those decisions. In terms of Amir's running well. His attitude's been outstanding. He's been brilliant the way he's gone about the last couple of weeks, and he will have opportunity in England to show us that he still deserves a spot in the World Cup squad. So he'll get some opportunities there, as will everybody, and it'll be interesting to see who steps up to the plate and takes them. Last question from Mickey. Ibrahim is now. Yeah, Mickey, from the day when you were focusing on the fitness level in Pakistan cricket team, and you guys set benchmark 17.4, but when you were going for this big journey, 5 of the players like Yasir Shah, Shadab Khan, Mohammad Hafiz, Mohammad Abbas, Abid Ali, Imad Wasim, these players are, in fact, their fitness is doubtful. How disturbing is this for you? I don't know, I'm not sure where you got your information from. Mohammad Abbas has just run his personal best. Mohammad Hafiz hasn't done anything for 6 weeks because he's had a broken finger. Mohammad Hafiz is always incredibly fit. Yasir Shah has work to do. I'll make no bones about that. He gets the required level just. He's got a lot of work to do, Yasir Shah. Imad Wasim, we've already covered off on, and I'm not sure who was the other one you mentioned? Abid Ali. Abid Ali was perfect. He passed his test. He passed his test. The one thing you've got to realize with Abid Ali and Hasnain is they've only been in our setup for the last 3 weeks. They've come into our setup. The standards in our setup are incredibly high. They have never been subject to the standards that they've been to now. Their performances over the last 3 weeks, and I include Hasnain in that, and Abid Ali, has only gone up. Every time they've done a test, every time they've trained, Hasnain hadn't run a fitness test ever in his life. He hadn't run a yo-yo test when he ran the first one. Poor Hasnain, when he's supposed to go slowly, sprinted the first couple, and he didn't realize the concept. I can honestly say that their attitudes to their fitness has been exceptional, and we are very, very happy and very proud with the way they've gone about it in terms of their attitude. Mickey, we had a number of foreign coaches in the past, but we never won the mega event. What's special in you as Mickey Arthur can make the difference or can make the history for Pakistan? Ultimately, we prepare the players. We set up strategy together with the captain. I think the key for that is I can't guarantee that, but what I can guarantee is preparation. What I can guarantee is proper strategy. What I can guarantee is a very happy dressing room, and what I can guarantee is our belief in every one of the players that play for Pakistan. And that are embarking on this journey. That's what we can give them. We trust them, we trust their ability, and we'll give them the belief and confidence to hopefully get them to perform to the best of their abilities. Okay, now we'll take question from Sarfaraz. Sarfaraz Sarfaraz, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 दिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 दिन हम रिसेंटली हारे हुए हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छा नहीं कर सका वनडे में, एशिया कप में पाकिस्तान का बहुत बुरा गुजरा है, आप वर्ल्ड कप की टीम लेके जा रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, तो बुनियादी स्ट्रेंथ क्या है और दुरुस्त करने की क्या जरूरत है? और दूसरा, आसिफ अली अगर टीम में नहीं होंगे तो आप और इमाद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लास्ट ओवर्स में हिट करने के लिए, तो इस खिलाफ को कैसे दूर करेंगे? देखें, जहाँ तक आपने बात की पास की, तो देखें ठीक है, अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करते हैं तो हमने कुछ विकेट ट्राई आउट करते थे, लेकिन हम अगर आप ओवरऑल सीरीज देखें तो आपके 7 से 8 जो मेन प्लेयर थे वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे, और आखिरी 2 मैचों में आपके जो करंट प्लेयर टीम के थे वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। आई थिंक मैं समझता हूँ कि हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, टीम के तो हमने गलतियाँ नहीं है, इसको हम दूर करने की हमने कोशिश की है यहाँ। और जहाँ तक रही बात टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देने की, तो इंशाल्लाह
ये मैं आपको पूरी एश्योरेंस देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे हार्ड वर्क किया है, जो पूरे एफर्ट हमें वहाँ पे 10-12 दिन मिलेंगे, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये टीम जो है पाकिस्तान की जो जा रही है, ऑब्वियसली आप लोगों ने जैसे कहा कि इस टीम को गाइड करेंगे और ये आप लोगों की टीम है और हम पूरी कोशिश करेंगे जो हो गया हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे और इस वर्ल्ड कप में हमारे पास जितनी भी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा करने की पाकिस्तान टीम के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रही बात आपने हार्ड टीम के देखें, बैटिंग ऑर्डर जो है वो हमने कोई डिफरेंट बनाया है, मैं आपको ऊपर में बैटिंग करते हुए देखूँगा ऊपर के नंबर पर, उसके अलावा शेख भाई जो है वो सेकंड पर बैटिंग करेंगे, उसके अलावा इमाद है, तो ये सारी पोजीशन है जो हमने सॉर्ट आउट की है, इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे इसको अप्लाई करें वहाँ पे। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है फिटनेस को लेके, तो फिटनेस के बाद हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया क्योंकि एक्सेप्ट किया चीफ सेलेक्टर ने भी कि हमने समझौता किया, फेवर किया, साथ पूछा चाहूँगा कि आपके बारे में परसेप्शन बनना चाह रहा है कि आप कई कोर्ट जो अहम फैसले हैं उसमें शामिल नहीं होता है, किस तरह इस चीज़ को आप डिनाई करेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि फिटनेस की जो आपने बात की देखिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक ही लड़का था देखें ना, क्योंकि मार्चों में हमें पसंद लगे वो स्ट्रगल कर रहा है उसकी एक ही वजह से, तो बाकी अगर आप उसके सारे टेस्ट देखें तो वो उसने क्लियर किए हैं। यहाँ तक रही आगे की बात, आप ही तो हंसने जैसे निकी ने बताया कि वो हमारे सेटअप में नए थे, उनको आइडिया नहीं था कि यो टेस्ट में कितनी एफर्ट लगती है, ये जो हमारा 5 राउंड का टेस्ट है उसमें कितनी जोर लगता है, तो आज ये बच्चे इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया दोनों ने, और दोनों ने अपना फिटनेस टेस्ट पास किया और इमाद का जैसे बताया कि थोड़ा सा उसको इंजरीज जिसकी वजह से हमने उसको देखा कि हमारे टीम के कॉम्पिटिशन के लिए वो एक बेहतर ऑप्शन था, तो इसलिए हमने थोड़ा उसको मार दिया, लेकिन अदरवाइज इमाद के जितने भी टेस्ट थे बाकी वो सारे उसने पास किए। और यहाँ तक मेरी बात मेरी कि मेरी जो है वो राय शामिल नहीं होती, देखें राय बिल्कुल शामिल होती है, और अगर आप ये इस टीम की बात करें तो ऑलमोस्ट ये टीम हम लोगों ने मेकअप माइंड टीम थी, 7-7 से वही लगे थे, तो ऐसा नहीं है सबकी मशावरत से टीम बनती है, उसमें कैप्टन भी होता है, कोच भी होता है, सेशन कमेटी भी होती है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक फुट है और सबसे मिलकर टीम बनती है। मेरा क्वेश्चन जो है ना कॉम्बिनेशन के मतलब है कि क्या ये कोशिश हो सकती है आपके लिए कि शुआब मलिक और दोनों एक मैच में खेल सकती हो? मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है एक ही मैच दोनों करती है। दूसरी बात ये आइडियल सब्जेक्ट होती है कि अगर आपका एक अपना लेफ्ट हैंड हो दूसरा राइट हो तो बड़ा बॉलर को बड़ा प्रॉब्लम होती है, हमारे दोनों लेफ्ट हैंड है, क्या ये भी कभी आपने देखा कि ये हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये ओपनर के साथ देखिए आखिरी वाले सवाल का देखिए, अब जाहिर सी बात आपके जो दोनों ओपनर हैं वो दोनों लेफ्ट हैंड हैं, तो पहली प्रायोरिटी आपकी मामूल को फ़खर दमानी है जो कि आप जाएंगे, उसके बाद तीसरे ओपनर की शक्ल में आपके पास हमारे पास आबिद अली मौजूद है, तो अभी ऐसा कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पहले भी पास में आमिर भाई और सईद भाई जो है वो इकट्ठे ओपनिंग करते हैं, तो ऐसे कोई मसला नहीं है, दोनों माशाल्लाह ज़बरदस्त फॉर्म में, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं फॉर्म में तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जहाँ तक रही बात हफीज़ भाई और शेख भाई की, देखें ये दोनों आपके की प्लेयर हैं, और जैसे कि शेख भाई ने बोला कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों से उनकी सीनियरिटी जितना फ़ायदा उठा सके उतना फ़ायदा उठाएं, और ये दोनों हमारी टीम की बैकबोन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों एक साथ एक मैच में खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की टीम फेवरेट है क्या अंडरडॉग? देखिए फेवरेट जब जाती है तब थोड़ा मसला हो जाता है टीम का जाना, तो अंडरडॉग जाती है तो वो टीम जो है ज़्यादा टीम में ज़्यादा खतरे में रहती है, तो मैं समझता हूँ टीम अच्छी है हमारी, और अंडरडॉग जा रही है पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा अच्छा है। सरफराज, अभी आपकी वज़ीर से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको कहा कि आप आगे पढ़ करें, तो ये दूसरा ये बताइएगा कि इस वर्ल्ड कप में आपका ट्रम्प कार्ड कौन सा खिलाड़ी होगा? क्योंकि लास्ट बात है 10 मैच से और 20 मैच आप खेलने पूरा टूर में। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान टीम को देखें तो हमारे नंबर 7 के बाद जमाल वसीम या वही मशरफ को ऐसे ऑलराउंडर आप ले रहे हैं, अगर वो लोग ऐसे बैट्समैन उसका परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी तो बात है इन दोनों से आपको अब इस वर्ल्ड कप में में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्या प्रैक्टिस हुई? देखिए पहले तो इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी टीम को वहाँ पे इनवाइट किया और बहुत ही मोटिवेशनल बातें की, और एज अ कैप्टन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि यार दिलेरी से खेलना, हम हमारी पूरी कौम जो है हम सब जो आपको सपोर्ट करेंगे, रिजल्ट जो भी हो आपने अपना बेस्ट गेम देना है। और जहाँ तक रही बात आपने कि हमारे लो ऑर्डर की बात की आपने कि इमाद वसीम और फहीम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लेयर हैं और यहाँ पे इन्होंने बड़ा काम किया। इमाद जो है बहुत अच्छे लीग में लग रहे हैं, अगर आप उसके देखें साउथ अफ्रीका में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी लो ऑर्डर में जाके, उसके अलावा यहाँ भी कुछ नहीं उसने खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी नेट पर जो हमारा कल भी मैच हुआ तो वो बहुत अच्छे लीग पर लग रहा है, उसको खुद भी ये आइडिया है कि उसने यहाँ बैटिंग करनी है और कोशिश है उस पर काम की।
तो इंशाल्लाह मुझे पूरे उम्मीद है जो चीज़ें हमने यहाँ पे काम किया है वो इंशाल्लाह वर्क करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और एक सवाल आपका ड्रम कार्ड, ठीक है, ड्रम कार्ड जो है ना वो आपके सारे प्लेयर होगा, कोई एक आपका ड्रम कार्ड नहीं होगा। आपको पता है टीम जो है वो सारे प्लेयरों से जीतती है, किसी एक प्लेयर से वो आपको एक ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है वो निकल के सामने आता है, लेकिन 15 के 15 जो भी प्लेयर्स खेलेंगे वो सारे ड्रम कार्ड होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। सरफराज, आपकी अपनी पर्सनल बैटिंग पोजीशन पिछले 2 साल में थोड़ी सी वेरी की है, कभी आप नंबर 4 पे हैं या कभी आप थोड़ा सा नीचे सिचुएशन के मुताबिक, तो इंग्लैंड में आपकी कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन होगी या फिर आप वेरी करेंगे सिचुएशन पे? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं टॉप 5 में खेलूँ। सरफराज, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप नहीं समझते कि अभी वर्ल्ड कप के लिए 1.5 माह है, टीम आपको पहले देखी गई है, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं अपने इंग्लैंड खिलाफ फिर सीरीज भी खेलनी है, 15 के अलावा 2 खिलाड़ी और आपके साथ हैं, आप नहीं समझते कि आपके लिए मुश्किल होगा अगर 2 खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं होगी 15 की स्क्वाड को चॉइस करने में? नहीं, देखिए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, और हमने जो है हमारे माइंड में हमारी टीम है कि हमें पता है कि हमने क्या टीम जो है वर्ल्ड कप में उतारनी है। तो 17 खिलाड़ी ले जाने का ये मकसद था कि आपको पता है कि हमारे एक तो 5 मैचेज जो है वो इंग्लैंड से हैं, उसके अलावा जो हमारे 2-3 पहले प्रैक्टिस मैच है, उसके बाद 2 प्रैक्टिस मैच हमारे वर्ल्ड कप से पहले हैं, और आपको पता है कि हफीज़ भाई की इंजरी है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है इशू वाली बात, हमारे पता है हमारी क्या टीम है इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे जो हमारी बेस्ट 15-11 है वो वर्ल्ड कप में होगी इंशाल्लाह। सरकार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कभी इंडिया से नहीं जीत सकी, मौजूदा सूरत हाल में बहुत समझते हैं ये जंग है हमारे पाकिस्तान इंडिया की, तो आपके लिए तौर कप्तान ये मैच कितना स्पेशल होगा, आपके लिए आप क्या उसको बात करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एज ए कैप्टन मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए 10 के 10 मैच जो है ना वो एक जैसे ही हैं जितने, क्योंकि हमें हर टीम के खिलाफ मैच जीतना है, हमें सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतना है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान सबकी यही ख्वाहिश है कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतो, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है हम हर मैच जो है वो इंडिया जैसे ही समझ के खेलेंगे, क्योंकि हमें अफगानिस्तान से भी वैसे ही मैच खेलना है जैसे हमें इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। तो हमारी फोकस जो है वो सारी टीमों के खिलाफ होगा। और जहाँ तक आपने बात की है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि हमने एक बड़े इवेंट में उनको बहुत बड़े मार्जिन से हराया हुआ, तो इसका एडवांटेज होता है हमारे पास। क्वेश्चन है कि मोहम्मद हसनैन को बहुत जल्दी इन किया गया टीम में ये PCB की परफॉर्मेंस पर, तो अब उनसे आपकी क्या बात है? और सेकेंडली आप मोहम्मद फहीम अशरफ पर बड़ा एहसास कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदला कहा कि उनको हम ऐसा ऑलराउंडर नहीं कंसीडर कर रहे, उनको ऐसा बॉलर लेके जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इंजी भाई ने देखिए जो बात की है वो ऑलराउंडर एक होते हैं ना, ऑलराउंडर जो होते हैं जो कि बैट्समैन बैटिंग भी होते हैं बॉलिंग भी होते हैं। फहीम अशरफ जो हैं एक तो उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और वो एक ऐसे बैट्समैन जो कि बैटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें बॉलिंग की कैपेबिलिटी, तो वो बॉलिंग प्लस बैटिंग ऑलराउंडर हमारे लिए टीम में शामिल होंगे। ऑब्वियसली बैटिंग को जो है 8 नंबर पे या 9वें नंबर पे बैटिंग करनी है, तो उनका रोल ये वाला होगा। ऑब्वियसली 6ठे 7वें पे तो ऑलराउंडर आते हैं, लेकिन उनकी अगर बैटिंग आएगी तो ऑब्वियसली 8वें या 9वें नंबर पे बैटिंग करेंगे। तो एक तो फहीम अशरफ का ये हो गया, और मोहम्मद हसनैन की देखिए जहाँ तक आपने बात की, देखिए वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि 150 प्लस पे बॉलिंग कर सकता है, और उसने ये करके दिखाया अभी भी। और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जब उसने बॉलिंग की तो आपके सामने उसकी बॉलिंग है, ठीक है थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जैसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी खत्म हुई है तो हमने उसको यहाँ पे फॉरेन अकेडमी बुलाया, जो उसकी चीज़ें देखी गई है, उसकी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया, उसकी बॉलिंग पे काम किया, तो वो इनएक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन वो एक पाकिस्तान टीम के लिए की फैक्टर हो सकता है इंग्लैंड सीरीज में और वर्ल्ड कप में। ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर अपने देश से परफॉर्म नहीं करे तो बात सामने के चक्कर की, लेकिन अब मेगा इवेंट आया तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो अब आप मोहम्मद आमिर के बगैर अपने हमारे जो देश है तो कहाँ पे रेट करते हैं, आप क्या समझते हैं कितना कुछ? देखिए, आमिर के पास अपॉर्चुनिटी है, ये 5 मैच में ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि हम रोटेट करें सारे 5 बॉलर को, ज़्यादा बर्डन मत डालें, क्योंकि इसलिए हम लोग जो है 6 5 बॉलर लेके जा रहे हैं प्रैक्टिस मैचेज में। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे इम्प्रूव करें, जिस तरीके से यहाँ पे वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। बॉलिंग में उन्होंने उनका फिटनेस लेवल जिस तरीके से उन्होंने फिटनेस में यहाँ पे रनिंग्स वगैरह की हैं, बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कल मैच में भी बॉलिंग अच्छी करते हुए दिखाई दी, तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बेहतर करें और बॉलिंग अच्छी करें। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको कि अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर, वो अच्छा परफॉर्म करें। और बॉलिंग जगह की ज़्यादा आपने बात की, हसन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, शाहिन शाह जैसे निक्की ने बताया कि ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान टीम के लिए, जुनैद है, हसनैन है, तो हमारी बॉलिंग अच्छी है, तो इंशाल्लाह कंपटीशन अच्छा होगा सारे बॉलर्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन कादिर लाल और सरफराज, मेरा सवाल है कि पहला सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में जो अच्छी टीम्स हैं उनमें हार्ड हिटर काफ़ी हैं, मैक्सवेल है, मिलर है
और हार्दिक पांड्या है, तो हमारी टीम में आप किसको ऑडिटर कंसिडर करते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि 23 मई तक जो है वो पाकिस्तानी टीम में चेंजेस की जा सकती हैं, तो किसको ध्यान में रखें? मतलब फास्ट बॉलिंग में वहाब याद है, मोहम्मद रिजवान है, तो आपके ध्यान में कोई होगा कि जिसको 23 मई तक आप उसको प्लेयर को अपने पास शामिल करें? देखिए, जहाँ तक रही बात 23 मई की, तो देखिए वो हमें आपको पता है कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे माइंड में पूरा है कि हमें पता है कि हमें क्या टीम वर्ल्ड कप में 23 मई को हमें कंफर्म करनी है, ये हमारे माइंड में हम यहाँ से देख के जा रहे हैं। मुझे फिर शादाब का एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पूरे उम्मीद है कि शादाब जो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शादाब जो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा। टीम हमारी मेकअप माइंड में है कि हमें ये टीम खिलानी है वर्ल्ड कप। सरफराज, हमारी टीम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, ये जो स्क्वाड जा रहा है, जो अभी तक इंग्लिश कंडीशन से वाकिफ नहीं है, तो क्या पहले मैचों में उनको तरजीह दी जाएगी कि वो मैचेस में परफॉर्म को खिलाया जाए ताकि वो उस कंडीशन से वाकिफ हो? नहीं सर, ये इसमें से देखिए, अगर आप हमारी टीम देखेंगे तो 11 प्लेयर वो हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा थे। तो एक दो तीन ही प्लेयर थे जो कि इन्होंने इंग्लिश कंडीशन में नहीं खेला। आसिफ अली हैं, आबिद अली हैं, और उसके अलावा हसनैन हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप बाकी प्लेयर देखें तो अपने कंडीशन में खेला हुआ है, और इस टीम में 11 खिलाड़ी वो हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इस वक्त नॉन टेक्निकल क्रिकेटर थे पीएम, अब पीएम जो है वो पैटर्न भी हैं और लेजेंड और 92 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। क्या इस बार जिस तरह आपको उन्होंने टिप्स दी हैं कि समझेंगे ट्रॉफी पाकिस्तानी की है? सर इंशाल्लाह देखिए, बिल्कुल आप उम्मीद रखें कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा कर सकती है। और देखिए, अगर आप पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान टीम ने पहले ये अचीवमेंट कर चुकी है, और पाकिस्तान टीम दुनिया की शायद वो 3-4 टीमों में जानी जाती है जिन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं आईसीसी के वो सारे जीते हुए, चाहे वो 2006 का हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो। तो ये पाकिस्तान टीम जो है इंशाल्लाह कोई अगर जीतेगी तो ये पाकिस्तान टीम पहले कर चुकी है, और पाकिस्तान टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो इसीलिए हमने ये अपना कैप्शन लगाया, वी है। आपकी जेरे क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीते, आपकी जेरे क्या आप इमरान खान बनना पसंद करेंगे, जीत के छोड़ देंगे, या इसी फिटनेस के साथ, इसी परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्ड कायम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप? देखिए, ये मैं इमरान भाई ने भी सोचा होगा कि वो तो क्रिकेट छोड़ने के बाद इस तरफ आए थे, तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो क्रिकेट खेलनी ऑब्वियसली ख्वाहिश एज अ कैप्टन सबकी ज़रूरी होती है कि जो एक काम इमरान भाई ने किया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए किया, 92 वर्ल्ड कप जीते, ऑब्वियसली एज अ कैप्टन मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि हमारी भी पाकिस्तान की टीम है वो वर्ल्ड कप जीते, और जैसे उन्होंने नाम बनाया तो मेरी भी कोशिश होगी मैं भी ऐसे ही नाम बनाऊँ पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा पाकिस्तान टीम को।